In today's class, we'll discuss about the Docker. Okay, we'll discuss about the containerizations. So, I'm जो DevOps रो starting, right? DevOps fundamentals, DevOps concept, right? सब बुझी सारा पर हम कौन तीनटा टूल वर्तमान पर्यंत शिखिचे जोटा कि सोर्स कोड मैनेजमेंट रो GitHub आसुचे CI/CD ପାଇଁ Jenkins ଆମେ ଶିଖିଛେ ଆଉ configuration management ଆଉ continuous deployment ପାଇଁ ଆମେ Ansible ଜାଣିଛେ, right? ତ ଏବେ ଆମେ ଶିଖିବା containerizations বা containerize କେମିତି ଗୋଟେ applications କୁ ଆମେ କରିବା এটা ଆସୁଛି ଆମର continuous deployment part ରେ. Okay, so how we can containerize one application? So for that we are going to learn a tool called Docker. तो हमें Docker सीखिबा. तो Docker जो particular जो image था हमें देखुछ image रू कौन देखुछ actually गोटे जस्ट सिंपल गोटे ब्लू वेल अच्छी वेल ऊपर किछि बॉक्सेस अच्छी कंटेनर्स राइट ता माने कोन सिफ रे जहां भी कंटेनर्स अच्छी हम ताको कोन सिफ करू छे राइट सो बिल्ड शेयर एंड रन द कांसेप्ट हमें भलो भाबे बुझिबा राइट तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉकर हाउ तार सु बेनिफिट्स कोन फीचर्स कोन अब हमें डिस्कशन करिबा. So what is Docker? Docker is a platform used to containerize your software. It's a tool, a platform जहाँ द्वारा कि हमें जो software বা जो applications तक हमें package कर containerize करी परिबा. Okay? So Docker is a platform used to containerize your software using which you can easily build your applications, package them with the dependencies required for your applications. So हम applications में जो dependencies दरकार, right? मैं build करी परिबा applications में dependencies जा दरकार, ताकू package करी करी गोटे container, right? Your applications into the container and further these containers are easily shipped to run on other machines. तो इटा बुझिबा को चेष्टा कर हम तुमको भलो बुझे दोचे. तो first कौन कहला इटा गोटे platform जोटा कि हमें यूज करूचे कोन कंटेनराइज करिया पई कोन कंटेनराइज करिया पई ना सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस राइट जो एप्लीकेशंस को हमें कोन डिप्लॉय करिबा जे कोनसी प्लेटफॉर्म रे जे कोनसी सर्वर रे जे कोनसी मशीन रे तो ता पई कोन दरकार से जो पैकेजिंग हमें करूचे सो पैकेजिंग कला बळे गोटे एप्लीकेशंस रन होबा पई तार जहां भी सब प्री रिक्विजिट्स होउची राइट जहां भी सब कोन प्री रिक्विजिट्स रहउची से सब प्री रिक्विजिट्स को हमें कोन करबा पैकेज करी बिल्ड करी ताको बडे इमेज रे क्रिएट करी हमें रन करी जेमति कि हमें देखितले कोठी Ansible रे राइट डिप्लॉय करबा पूर्वरु हमें कोन जहां भी तारो प्री रिक्विजिट्स रहउची जेमति कि ओडे सिंपल जावा एप्लीकेशंस हमें देखितले सो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द जावा एप्लीकेशन like the basic thing is Java should be installed. Okay. Otherwise, the applications will not work, right? And the respective, suppose a web server, web application, I'm just run करते हैं web server थी वादर का, अतरा specific configuration setup थी वादर का, right? तो ये सब कौन हमें Ansible ले playbooks लेके तिले execute करी separately run करी create करी तिले, right? But एटी कौन होची ना Ansible केसे कौन है इधर ना हमें जो playbooks लेखु तिले सेटा थिला कौन machine specific माने हमें जदी Amazon Linux ପାଇଁ लिखिचे तो सही प्लेबुक ता Amazon Linux ପାଇଁ हम एग्जीक्यूट करि परिबा तो जदी Ubuntu ପାଇଁ दरकार देन Ubuntu ପାଇଁ we have to write another playbook to execute in the Ubuntu but Docker केस रे कोन होची ना हमें पर्टिकुलरली जहां भी पैकेज करिवार अछि गुट्टी कोड लिखाबो से गुट्टी कोड को हमें कोन करबा जे कोन से एनवायरनमेंट रे बिल्ड करी करी ताको रन करि परिबा तो सही टाइम पाई Docker is more popular means containerization is more popular. ताऊ कौन देखियो Docker is an open platform for developing, shipping and running applications. It enables you to separate your applications from your infrastructure so you can deliver the software quickly. क्या कौन कुछ ना हम जो applications बिल्ड करछे बनेइछे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सेपरेट कर दोछि जोटे कि हमरो लूज कपलिंग आछि बा जो माइक्रो सर्विसेज कांसेप्ट आछि इट वाज यू
So microservice ऊपर परे देखिबा तो Kubernetes पढ़िबा, right? So we can deliver the software quickly. With Docker, you can manage your infrastructure in the same way you manage your applications. I mean, Gemini applications to manage your infrastructure, we can easily manage. So by taking the advantages of Docker methodologies for shipping, testing, and deploying code, we can significantly reduce the delay between writing the code and running it in productions. So, जेहेतु आमे गोटे Docker कौन करछन आ containerized गोटे applications को आमे development environment हि itself, right? Packaging करछु जहाँ जहाँ software जहाँ जहाँ prerequisites दरकार. तो ताको आमे कौन करे build सइला परे तबे जेकोनसी प्लेटफॉर्म रे development हो, pre-productions हो, testing server हो, productions, we can easily run it. So it कौन ना time save हेगला गोटे environment creations करिया पे setup करिया पे because we already have packaged it in the Docker in the image, right? So that's the Dockers and little benefits we saw. Now let's understand more. So we talked about the Docker first, right? So Docker actually, this containerization uses virtualization concept. So most of you, right? समझते जानिथिबो गोटे virtualization concept. जे भी जानिनी मैं बते देई तुमको. तो virtualization कौन? हमें जदि देखिबा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, राइट? आईटी डेवलपमेंट रे तो जितबळे बिफोर virtualizations कौन होतला ना? So standalone machines, single machines, right? जोतरी की हमर complete applications stack deploy होतला, run होतला. But virtualization आसीगला पर कौन होतला ना? से गुट्टा machines को multiple parts रे divide कराउतला, machines create कराउतला, जदि कि हमर virtual machines को होतला, VMs को होतला, तो VM रे हमरे multiple applications run नहीं पारे. तो virtual concept ता कौन actually? What is virtualizations? It refers to importing a guest operating system on your host operating system, allowing developers to multiple OS on different VMs. Multiple OS on different VMs. So, while all of them run on the same host, thereby eliminating the need of provide extra hardware resources. Let me explain these things in diagram. You can understand more clearly. Okay. So virtualization concept kahin ki beneficial, right? How kahin ki ite popular? Maybe ame virtualization use karuche. Most of the companies are going with containerizations, but containerization also uses the concept of virtualization. Okay, let's see. तो जो कहतली फुल स्टैक डिप्लॉयमेंट कथा, राइट? तो हमें कोन सेतले गुट्टे एप्लीकेशन रे, राइट? जदि हमें गुट्टे एप्लीकेशन बा गुट्टे मशीन रे किछि गुट्टे एप्लीकेशंस हमें फुल स्टैक ता डिप्लॉय करियो. तो कोन होतला? तो सपोज विदाउट virtualizations मु कोन कली आगुरु, ओके, प्रायर टू virtualizations कोन होतला? हमर जदि गोटे कोनसी मशीन रे धर हमर ते दुईटा एप्लीकेशन रन करियार अछि बा तीनटा एप्लीकेशन रन करियार अछि, तो मु कोन करदु ना गोटे मशीन रे दुईटा तीनटा एप्लीकेशंस A1 A2 A3 तीनटा एप्लीकेशंस रन करते ता सहित डेटाबेसेस रहउतला, ता सहित सब कंप्लीट डिपेंडेंसीज एवरीथिंग were getting installed in one machine itself, right? So जो गोटे machine से हम installations कले आर demerit कौन? आर demerit कौन? ना जदि by chance machines corrupt हे गला बा crash हे गला, machine ता suppose crash हे गला, किसी issue आसीला machines shut down हे गला, crash हे, तो ले कौन ना हमर तीनटा जो applications रन होची बा databases सब जगह कौन unavailable ହେଇଯିବ. We cannot access these applications, and it was very difficult
two set of applications and the dependencies, because everything were installed in one machine itself. So this is called actually the monolithic architecture. We are putting everything in one machines, right? Monolithic one. We'll understand more on monolithic and microservices when we go to Kubernetes part. But the concept is in one single machines, everything we're putting. But then the VMware, the company, right? They come up with a super technologies, right? That is called the virtualizations. Okay. So they used kind of VMware, right? They used to create virtualizations, means in single machine, we can create multiple virtual machines. One single hardware, right? So here in this case, what was happening? The same hardware and the softwares being used of only one machines. ए केस रे कोन होछि ना वर्चुअलाइजेशन केस रे कोन होबो हमें सिंगल जो मशीन यूज करूचे से कोन करबो से हार्डवेयर टा कार यूज करबो ए होस्ट मशीन रो एटा हमर होस्ट मशीन माने जो मशीन रे हमें वर्चुअलाइजेशन करूचे ये सब कोन हला VM1 VM2 VM3 वर्चुअल मशीन 1 2 3 तीनटा मशीन क्रिएट कर देली कोन गोटे लैपटॉप भीतर सपोज एटा हमर गोटे लैपटॉप आदर मु तीनटा मशीन्स क्रिएट कर देली तो मते तीनटा एप्लीकेशंस रन करा छै A1 A2 A3 राइट तो एठी कोन होछि हमर तीनटा एप्लीकेशंस हम सेपरेट कर देले फिर ये एप्लीकेशन कोन होछि ना आ पई सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आप सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम बट ये केस रे कोन होतला ना सेम ऑपरेटिंग सिस्टम सब एप्लीकेशंस यूज होते आपे हमें कोन कले सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमें यूज करते बट हार्डवेयर माने कोन यूज करचंती दे आर यूजिंग द सेम हार्डवेयर तो एठी हमें वर्चुअलाइजेशन रे कॉस्ट सेविंग हला राइट तो हमें जदी चाहि थांते एठी तीनटा एप्लीकेशन को तीनटा मशीन्स रे सेपरेट हार्डवेयर बनिकरी जदि अलगा करिवार थिला कोन तीनटा मशीन्स नै तांते तीनटा अलग अलग रखि तांते बट एठी कोन कला ना गोटे मशीन रे वर्चुअलाइजेशन करिकरी हमें तीनटा VM क्रिएट कर देले जोटी कि हमें तीनटा एप्लीकेशन हम जदि बाय चांस VM1 एटा डाउन हे गला राइट हमर कोन हो हाउ दुईटा मशीन्स दुईटा एप्लीकेशंस रन होची जदि आ गोटे डाउन हे आ गोटे मशीन्स रे गोटे एप्लीकेशन स्टिल रहियो बट ये केस रे कोन हो जदि मशीन्स डाउन हे गला टोटल एप्लीकेशन जहा होची सब जगह क्रैश हे जिवो सब जगह अनअवेलेबल हे जिवो बट हियर इन दिस केस still one available there right here another demerit would be suppose the demerit we'll talk about in the containerizations okay so it kon hobo gote problem a gote problem joti pai amar asila high availability concept bujhu sambo so eta amar hela gote kon machines जदि हमर मेन मशीन ही itself crash हे गल तो कोन होबो तो all VMs also will go down which applications available हो concept सेम हे गला ताको ओवरकम करिया पई हमर आसी गला कोन concept गोटा हम जानिता एटा हम पढिबा ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर जो concept हमें AWS रे क्लाउड रे पढिबा से तम तुम बते देबी मोर क्लियरली राइट असला कोन हाई अवेलेबिलिटी हाई अवेलेबिलिटी ता विषय हम ऑलरेडी क्लाउड क्लास रे डिस्कशन करि छै राइट तो हाई अवेलेबिलिटी हमें सेम रेप्लिका M1 आ गोटे मशीन्स नै जो राइट जो ठीक है हमर रहइबो सेम कांसेप्ट तीनटा VM तीनटा एप्लीकेशंस जदि ये सिस्टम टा गोटे डाउन हला देन विल हैव अनदर मशीन्स टू तो देखो हाई अवेलेबिलिटी ये कांसेप्ट हम परे पड़ी एटा एथरे आसुरी राइट बट जानी था कांसेप्ट कोन यूज होची ठीक अछि virtualizations बुझिलो लेट्स अंडरस्टैंड virtualization कोन हमें कोन सेम मशीन रे तीनटा
virtual machines create kari pariba jota ki hardware tar same use kariyo but software will be different, right? So virtual is refers to bujeli bartan refers to importing a guest operating system on your host operating system. Eti hoche am jo dekhile eta kono amaro host operating system koda এটা নেই গেলে হোস্ট অপারেটিং এটি ওএস রହୁଛି হোস্ট অপারেটিং সিস্টম তা ভিতরে আমি কোন কলে গেস্ট অপারেটিং সিস্টম তিনটা ইনস্টল করতে তো এটা আমরা সেপারেট ভার্চুয়াল মেশিন হয়ে গেল, রাইট? সেটা হি বর্তমান হচ্ছে importing a guest operating system on your host operating system allowing developers to run multiple operating system on different virtual machines while all of them run on the same host, so thereby eliminating the need to provide extra hardware resources. So in case रे कौन है ना, हमें single hardware use कर ले, तीनटा machines ने ले, but single hardware use कर ले, right? तो hardware cost हमें eliminate ही कर ले, cost saving ही कर ले, right? तो सही सब रे हमें जल्दी देखिए बा, how कौन benefits रोचे? While these virtual machines are introduced, they help in industry in many ways, such as enabling multiple operating systems on the same machines. गोटे machine से हमें multiple operating system run करी पाएगा, and it was cheaper than the previous methods due to less or compact infrastructure setup. If there is any failure state, it was easy to recover and do its maintenance in case of virtualizations. Faster provisioning of applications and resources required for tasks. यदि हमें separate कर देले, right? Obviously it a faster provisioning as well. Increase in IT productivity, efficiency and responsiveness. So virtualizations use करके हमें benefits पाएगा, but still we are using virtualizations. But now there is another technology has come up which is called containerizations. So what is containerizations? Containerization is a technique where the virtualizations is being brought where the virtualization is being brought to containerization to an operating system level. तो सेटा हमें देखले हार्डवेयर लेवल, राइट? गोटे हार्डवेयर के मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रखुले, बट एठी कोन करियो ना, हमर हार्डवेयर रहबो सिंगल, गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम रे मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट करिवा. तो एठी हमें बोथ हार्डवेयर सेव कले, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेव कले, राइट? So system level in containerizations you virtualize the operating system resources. जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करे तार सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स को हम केमती यूज करि परिबा. वर्चुअलाइजेशन रे कोन होतला ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंस्टॉल करतले वीएम रे सही केवल एप्लीकेशन सही वर्चुअल मशीन रो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करतला. बट कंटेनराइजेशन रे कोन होची ना, different resources, different applications can use the same operating system resources. Okay, so it is more efficient as there is no guest operating system. एठी हमें आउ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करिबानी. तो से जो केस रे हमें बुझितले एठी, राइट? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम तीनटा ऑपरेटिंग सिस्टम सामने नैतले, राइट? तो तीनटा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशंस पय हमकु सही हिसाब रे कॉस्ट पड़िबो. OS installations पय कारण एवरी OS has a separate kernel, right? तो हमकु कॉस्टली आसीबो. बट कंटेनराइजेशन से कोन होबा ना, हमकु गुट्टे ऑपरेटिंग सिस्टम रे में तार कंप्लीट सिस्टम रो रिसोर्सेस को, हार्डवेयर रिसोर्स को यूज कर पाए. आज कंटेनर्स यूटिलाइज ओनली द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड शेयर्स द रिलेवेंट लाइब्रेरीज एंड रिसोर्सेस ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. तो केस रे कोन होतला ना, हमें गुट्टे मशीन रे, राइट, कंप्लीट तार हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली कंटेनराइजेशंस यूज करूछ. तो जहां भी हमें कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस रन करिवा, से माने कोन करिवे, सब जाका ए पर्टिकुलर सिस्टम रो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करू. सो कंटेनराइजेशंस इज ए लाइट वेट, जदि हमें अलगा मीनिंग्स रे देखिबा
माने containerization से different way different meanings से same meanings but different ways से जानिबा the containerization is a lightweight virtualization technology. It is a lightweight virtualization technology acting as an alternative to hypervisor virtualizations. तो जेतबेले VMware जो गोटे कंपनी अछि सेतबे virtualization technology invent करतला create करतला right virtualizations add करतला IT industry तो से यूज करतला गोटे टेक्नोलॉजी जोटा कोजे हाइपरवाइजर ओके हाइपरवाइजर यूज करिकरी से कोन ना वर्चुअलाइजेशन हमें करि करतले मशीन रे ओके तो इटा हला गोटे कंटेनराइजेशन इट्स अ डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन लाइटवेट वर्चुअल टेक्नोलॉजी एक्टिंग एज अल्टरनेटिव टू द हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशंस जोटी की हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन ने कोन होतला हमें बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम गेस्ट आउ होस्ट को नहीं चालुतले बट एठी कोन होबो ना हमर गेस्ट दरकार नहीं से केवल होस्ट मशीन रे ही हमें रखि पाइबा ओके so what is the advantages of containerizations? Containers are small and lighter in weight because they share the same OS kernel. Right? जेतु गोटी ऑपरेटिंग सिस्टम रोची से गोटी ऑपरेटिंग सिस्टम रो कर्नल यूज करछंती then it will be lighter. It does not take much time to boot off. In very fractions of seconds it will be boot off. हमें देखियो एग्जांपल जतो देखियो केते मिली सेकंड रे ओके केमती माइक्रोसेकंड रे केमती बूट अप होछि हाई परफॉर्मेंस विथ लोअर रिसोर्स यूटिलाइजेशंस हाई परफॉर्मेंस विथ लोअर रिसोर्स यूटिलाइजेशंस ओके तो रिसोर्स रो जो रिसोर्स कोन एक्चुअली हमें जो रिसोर्स विषय रे कथा होछि कि मते कहि पारे व्हाट इज दिस रिसोर्सेस एटा यदि तुम न बुझी परिबो देन डेफिनेटली डाउट रहइबो रिसोर्स कोन जो रिसोर्स विषय कथा ले हम तो पढ़ी दी पढुची तुम तो रिसोर्स पढ़ी देलो सुनी देलो बट सेटा कोन एक्चुअली एठी जो रिसोर्स विषय कथा होचे देखो रिसोर्स जो इंग्लिश वर्ड हम देखु एटा मेनी फील्ड रे डिफरेंट फील्ड रे डिफरेंट टाइप रो तार मीनिंग्स आसियो डिफरेंट यूसेज आसियो बट एठी हमें रिसोर्स खाउ कहूचे maybe RAM or ROM. परफेक्ट तो हमें तो मशीन्स विषय कथा होचे राइट मशीन रिसोर्सेस राइट जो कंप्यूटर वर्चुअलाइजेशन VM virtual machines with carved machine physical machines resource विषय कथा होचे then that's their hardware operating systems right OS and ये सब ही तार रिसोर्सेस रोची जोटा कि RAM रोची स्टोरेज रोची राइट मेमोरी स्टोरेज CPU ये सब वेला तार कोन बैंडविड्थ नेटवर्क ये सब वेला रिसोर्सेस राइट तो ये मोबाइल हाई परफॉर्मेंस विथ लोअर रिसोर्स यूज माने रिसोर्स जो कंप्यूटर जो रिसोर्स सब अछि माने RAM मेमोरी ये सब लेस यूज करूची सेति पई हाई परफॉर्मेंस आसुची ओके so mane rakho guys okay so in case of containerizations all the containers are sharing the similar host operating system jete bhi containers rochi to kon korjane gote single host ta next slide em tum bhalo bha auri bujhe debi je kemti single operating system use korchi multiple containers get created for every type of applications making them faster that too without wasting the resources unlike virtualization where kernel for every OS was required the virtualization case on kernel सब case रे use हुए but containerization we don't need separate kernel with single host operating system kernel we can work on okay तो ये जो examples हम कोतली बुझे दे बोले देखो it हला virtual machines right VM अब it हला हमारा container containers VMs तो VM केस रे देखो कोन होची एटा हला हमरो कंप्लीट सपोज गोटे कंप्यूटर राइट गोटे लैपटॉप बा कंप्यूटर तो एटी कोन होची ना जेतु गोटे पर्सनल लैपटॉप हम नैचे पीसी से पीसी पर्सनल कंप्यूटर पीसी नैचे से पीसी रे कोन होची गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल हेतियो जोटा कि हमर कुआ जाय कोन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जोटा कि हमर लैपटॉप रे बा
पर्सनल कंप्यूटर इंस्टॉल होइछि तो ता ऊपर आमे हाइपरवाइजर गोटे टूल बा जोटा हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी यूज करिकरी कोन करबा ना तीनटा सेपरेट मशीन क्रिएट कर दवा तीनटा सेपरेट मशीन्स क्रिएट करबा तो तीनटा सेपरेट मशीन क्रिएट करबा तो हमकु कोन करबा तीनटा ऑपरेटिंग सिस्टम दरकार गेस्ट ओएस ताकू कहजबो गेस्ट ओएस राइट गेस्ट ओएस सपोज एटा हला Amazon Linux एल मु लिखिली आउटा सपोज Ubuntu एटा सपोज Windows मशीन तो हमर जो एप्लीकेशन अछि अपन आप 2 आप 3 सपोज हमें डिप्लॉय करूचे तो ये Amazon Linux रे ये एप्लीकेशन ता रन होवा पई जहां भी बाइनरीज लाइब्रेरीज दरकार हमें सब कोन करबा इंस्टॉल करबा इन केस ऑफ कोन VM रे सेपरेट इंस्टॉल करबा से कोन यूज करबो जेतो हमें गेस्ट ओएस यूज करूचे ए ओएस रे गोटे सेपरेट कर्नल रहइबो आ ए ओएस को हमें परचेज करबा पड़िबो सिमिलरली ए ओएस रे कर्नल रहइबो ए ओएस रे भी कर्नल रहइबो सब सेपरेट सेपरेट हम परचेज कला पर हम बाइनरीज लाइब्रेरीज इंस्टॉल करबा तापर सब डिप्लॉय करबा तो ठीक कोन होतला तीनटा सेपरेट मशीन्स सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करछंती तो सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स ना यूज करछंती बट यूज होची कोन हार्डवेयर यूज करछंती गोटिए बट कंटेनर केस रे कोन होची ना हमें केवल होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स रखुचे ता ऊपर गोटे कंटेनर इंजिन गोटे रन टाइम जोटा कंटेनर इंजिन ता हमें इंस्टॉल करूचे इंस्टॉल कला पर ना से कोन करछि ना एटा कंप्लीटली प्लेटफॉर्म को कोन कंटेनराइजेशन पई रेडी करूची तो ता पई कोन होछि ना एठी हमकु सेपरेट मशीन आउ दरकार नाही VM आउ दरकार नाही तो ये कोन करूछि ना हमें ए जो पर्टिकुलर देखुचो सिंगल कंटेनर ए कंटेनर रे हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करबा से कंटेनर एप्लीकेशन में जहां बाइनरीज रिक्वायर्ड दरकार है ताको पैकेज करिकरी एई पर्टिकुलर लैपटॉप रे हमें मशीन रे हमें रन कर दवा तो एठी कोन होछि ए केस रे हमर केवल गोटी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होछि आ गोटी हार्डवेयर यूज होछि गोटी मशीन यूज होछि तीनटा मशीन्स गोटे मशीन्स बेस मशीन होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रहला ता सहित तीनटा सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम रहिला राइट बट ए केस रे गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहउछि एंड वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल कंटेनर्स एंड दे आर यूजिंग द सेम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस राइट ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेस चाहिए सेम कर्नल जे माने यूज करछन ये एप्लीकेशन आप 1 कार कर्नल यूज करिवो आर कर्नल यूज करिवो आप 2 आर कर्नल यूज करिवो राइट तबर से कर्नल माने कोन हार्डवेयर सहित इंटरैक्ट करिवे सेपरेटली तो सेति पय एटा ना हेवी वेट रोची हेवियर देन दिस कंटेनर तो एटी कोन होची ना आर जो कर्नल रहिला होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रो तो से माने आर कर्नल यूज करिवे हार्डवेयर सहित कथा वार्ता होवा पय राइट टू कनेक्ट एंड get informations from the host operating system hardware तो एटी कोन हला इजी हला सेति पय एटा लाइटर वेट तो एटी हमें कोन बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बंचेले एटी भी बहुत सारा सेविंग्स हला तो आ गोटे जो हमें कहूचे रिसोर्स यूटिलाइजेशन केमती बेनिफिशियल तापर हमें बुझिबा एटारे रिसोर्स यूटिलाइजेशंस आपन एटा तार डिफरेंट आसी तो रिसोर्स यूटिलाइजेशंस केमती होची एटी देखो इन केस ऑफ वर्चुअल मशीन से हमें जदी गोटे वर्चुअल मशीन बा टोटल गोटे मशीन बा लैपटॉप नेले सपोज मेमोरी ता देरे अछि 16 GB सपोज मो लैपटॉप रे 16 GB रो मेमोरी अछि रैम अछि वो एटी वर्चुअल मशीन तीनटा क्रिएट कली मो लैपटॉप रे तो मु अलोकेट कर देली कोन गोटे 6 GB अलोकेट कर देली आ गोटे 4 GB अलोकेट कली आ गोटे 6 GB सो दीटा 6 GB रो कली 6 6 12 4 16 GB अलोकेट कर देली तो जेति कि मु अलोकेट कर देली वर्चुअल मशीन्स क्रिएशन रे राइट मु तापरे कोन एप्लीकेशन तादरे डिप्लॉय कली तो एप्लीकेशन डिप्लॉय कला बरे कोन सपोज ओनली 4 GB यूज हला एप्लीकेशन यूज कला जो वर्चुअल मशीन मु क्रिएट कली वीडियो 1 2 3 एप्लीकेशन 4 GB यूज कला नेक्स्ट 2 GB कोन वेस्ट गला माने रहिला सेठी कारण एप्लीकेशन हमर केवल 4 GB रो मेमोरी यूज होची बाकी 2 GB रो मेमोरी हमें यूज करि पारुने कारण सेम मशीन रे केवल गोटे एप्लीकेशन हमें रन करूचे राइट आ बाकी 2 GB वेस्ट हेगी रहिला सेम केस रे वर्चुअल मशीन 1 GB वेस्ट हला 4 GB वेस्ट हला राइट बट
डॉकर केस रे कौन होची ना आमे जेतिक भी मेमोरी अलॉट करूचे एप्लीकेशन जेतिकी माने कंटेनर जेतिकी मेमोरी यूज हबो बाकी मेमोरी कौन हबो ना अवेलेबल हेकरी रहइबो कोडी होस्ट मशीन रे कारण से माने कोन कारण सेटा होस्ट मशीन यूज करूची तो मेमोरी सब जाक आ भीतर ही थिबो आकु जेतिकी दरकार से सेतिकी यूज करिवे जेतिकी दरकार सेतिकी यूज करिवे तो एटी कौन ओके गोटे बढ़िया एग्जांपल तुम दउची ओके आमे देखिचे राइट आमे तो बाहागरिया भोजी खाइबा को जाय गोटे थाए कोन बाहागर भोजी रे गोटे बफे सिस्टम थाए राइट जोटे की बुफे सिस्टम राइट जोटा बुफे सिस्टम रे कोन तमे तमे सब डिशेस थुआई तो तम हिसाब रे तमे जीवो आनिबो आसीबो खाइबो पर अलगा आउ गोटे सिस्टम रहउची कोन ना तमे मन समस्त माने बसथिबे तापर बाढी गिरी दबो राइट अनुमान थी सब बाढ़ी की तुमको दवा देख वर्चुअल केस रे कौन हो जो आम धर डिशेस बाढ़ी की दवा गोटे प्लेट रे बहुत सारा आइटम्स आम बाढ़ी की देदेले राइट तो गोटे पिला जो खाइब राइट से कौन कर पेट्रे जी जगह हम से सेतिकी खाइब राइट आ बाकी जो एक्सट्रा से देइतो कौन से वेस्ट हो फोपाड़ी पड़ो राइट बट बुफे सिस्टम रे कौन होची तमे सब डिशेस थुआई तुमको जेतिकी दरकार तुम जेतिकी खाई परिबो सेतिकी आनी तुम प्लेट रे खाइबो तेटी कोन ना फूड बंचिला राइट तो से कंटेनर केस रे भी सही एग्जैक्टली होची कोन तो जेतिकी रिसोर्स एप्लीकेशन गोटे यूज करिवो से सेतिकी नबो बाकी रहिला माने कोन होस्ट मशीन रे बाकी रहिला बट एटी कोन होची ना हम ऑलरेडी एलोकेटेड कर देइछे यूज हैला तो ठीक अछि नले बाकी वेस्ट हैला आई थिंक तुम भल भाग बुझी पारि राइट एग्जांपल जो देली तो सही हिसाब रे कंटेनर रे कौन बेनिफिट रोची रिसोर्स यूटिलाइजेशंस फाइन आ वर्चुअल मशीन रे कौन यूज होची राइट तार गोटे डिफरेंस देखिए वर्चुअलाइजेशंस और कंटेनराइजेशन ଭିतर डिफरेंस टा बेसी कौन रोची ऑलरेडी मैं आपको कहि सारी छी बट एटा पॉइंट्स रे लिखाई छी वर्चुअलाइजेशंस केस रे कौन होची हां विजय पचारो एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड के जो है कि प्रीवियस स्लाइड को ना ये फॉर जोड़ा थिला हां सर एटी जोड़ा हमारा बेस टोटल मेमोरी रहला जोड़ा 16 जीबी सर ये जोड़ा यूज है कि 4 जीबी 15 जीबी 10 जीबी एमटी नहीं होगा कि तो बेस मेमोरी टा 15 जीबी होछ ना एक्चुअली इन केस ऑफ डॉक्टर कोन ना तो जो मेमोरी एटी यूज है छी अलॉटेड है छी हम बोले আছে ना 16 जीबी मेमोरी टोटल मेमोरी अछि तो किसी कंफ्यूज लाउछ माने एमती को आके माने कंफ्यूज कोट असला तमे माने कोठी को जगह रे कंफ्यूज हो छ कहली एक्चुअली इन केस ऑफ डॉक्टर जोड़ा 35 जीबी बट टोटल 15 जीबी डॉक्टर तमे एठी कंफ्यूज हो छ मु जान पहले राइट हां ये सर এটা ଗୋଟେ টাইপো এরর ହେଲା এটা 35 জিবি লেখা হৈ যাইছি এটা টাইপো এরর 16 জিবি ରେ 35 ମୁଁ କେମିତି ଆଲର୍ଟ କରିବି କରିପାରିବିନି ରାଇଟ୍ टाइपो एरर आसी बट जदि भी तमे अलर्ट कलो किछ असुविधा नाही इफ यू आर अलर्टेड आल्सो तम सेति की मेमोरी अलर्टेड हैला बट तम एप्लीकेशन यूज करछि 30 जीबी सपोज टुमारो यू आर इंक्रीजिंग फ्रॉम 60 जीबी टू 70 जीबी तो 30 जीबी अलर्ट करछ माने से 30 जीबी भीतर ही यूज हबो राइट तो ये अलर्ट जदि आम कले भी किसी प्रोब्लेम नहीं कारण आमर जो एप्लीकेशंस यूज रखा होची से 3 जीबी भीतर तो ये जो डॉकर केस रे कोन होची ना आम जति बळे अलर्ट करूचे आमे गोटे पर्टिकुलर मेमोरी के आमे अलर्ट कर दोचे माने सेति आम अलर्ट जो कले ताको कुहाला जे तते इतिकी मेमोरी भीतर ही यूज होबो जे ताटू अधिका यूज कले देन एप्लीकेशन क्रैश हो जिवो এটা ଗୋଟେ ଡକର ର ଫିଚର ବି ସो এই কেস রে কোন হଉଛି देखो जो हाई अवेलेबिलिटी हमरଥିଲା ना ସେଇଟା आपण शो करथिले हाई अवेलेबिलिटी हां ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ डाउट होती है वर्चुअल मशीन टा जो हमर सेठी विजुअलाइजेशन VMware रे तो सेठी भी तो हमें जेतरा चाहूले सेठी माने मशीन क्रिएट कर दिले ना वर्चुअल मशीन
ଏନ୍ତା ହାଇ ଆଭେଲେବିଲିଟି ତ ସେ ଟିକେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଟିକେ ମାନେ ରହିକି ଟିକେ ଜାଣିଦେଲେ ठीक है नाଇଁ हाई अवेलेबिलिटी ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତମକୁ ବତଉଥିଲି ହାଇ अवेलेबिलिटी ଗୋଟେ ଦିନର କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ ହେଲା ମୋर देन 1 आवर ଲାଗିବ ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ହିଣ୍ଟସ ଦେଇଦେଲି ଓକେ ହାଇ ଓକେ अवेलेबिलिटी କେତେବେଳେ ନବା ତ ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ହାଇ अवेलेबिलिटी ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ରେ कंप्लीट पढେଇ ହାଇ अवेलेबिलिटी ଉପରେ ଆଉ ଏଟା ବହୁତ इंपोर्टेंट ରହିବ ହେଲା ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଟୋ ସ୍କେଲିଂ ଆଉ ଲୋଡ ବାଲାନ୍ସର ଉପରେ ଜାଣିବା तापर तुमको हाई अवेलेबिलिटी ऊपर पढ़ेगी सेठी AWS रे हम पढ़िबा हाई अवेलेबिलिटी ऊपर तब कंप्लीटली बुझेबी तो एथिरे खाली मु जस्ट वर्चुअलाइजेशन रो गोटे डिमेरिट ऊपर बा ताकू केमिति हमें हाई अवेलेबिलिटी द्वारा ताकू एप्लीकेशंस को अवेलेबल रखि परिबे सेटा जस्ट गोटे हिंट्स देली राइट त हमें मोर डिटेल्स रे बुझिबा हाई अवेलेबिलिटी रे छोटो टॉपिक्स न हाई अवेलेबिलिटी इज कंप्लीटली बिग टॉपिक तापर हम डिस्कशन करिवो ओके बुझिपालो विजय तो एटी जो आमे यूज कले ठीक है बढ़िया क्वेश्चंस एक्चुअली विजय पचले 30 जीगाबाइट अलर्ट हेची एटी 10 जीगाबाइट्स अलर्ट हेची राइट आमे अलर्ट कले 10 जीगाबाइट्स बट से यूज कला केते 2 जीगाबाइट्स बाकी सब फ्री रही गला ता माने जो अलर्टेड हेची माने डॉकर जो एप्लीकेशन रन होची app 3 can use until 10 gigabyte of storage memory sorry not storage memory तो memory app 3 memory ताडो अधिक हेले क्रैश हे जिवो कारण ता पाखी 10 जीबी ही अलर्ट हेची यदि ताको 15 जीबी दरकार तो एठी हमकु बढ़ेबा को पड़िबो तो एठी कोन हला ये अप टू 35 gigabyte जाई परिबो बट हमर अछि 16 gigabyte ताडो अधिक से 16 रो अधिक से जाई परिबोनी सेमती क्रैश हबो तो हमकु जदि फ्यूचर रे आकु बढ़ेगिरी 116 gigabyte कर देले तो एटी 35 gigabyte नहीं जो तो इ केस हम कहूची ना इन केस ऑफ डॉकर कोन होतले ना एप्लीकेशन जदा सपोज 16 gigabyte रहला हमरो ऐप 1 यूज कला 4 gigabyte ऐप 2 यूज कला 3 gigabyte एंड ऐप 3 यूज कला 2 gigabytes सो टोटल हला केते 9 gigabytes सो 16 रु 9 गला केते आउ 7 gigabyte कोन फ्री रहला वर्तमान जे त हमरो 16 अछि राइट 16 अछि त हमरो 7 gigabytes फ्री अछि त हम चाहिबा आउ गोटे कंटेनर आमे क्रिएट कर दबा आउ गोटे कंटेनर आमे सपोज ऐप 4 आउ गोटे कंटेनर क्रिएट कर द जोटा कि एही मशीन रे रन हो बट ए केस रे कोन हमको आउ करि ही परिबानी कारण हम पाखरे आउ मेमोरी नाही आमे ऑलरेडी मशीन क्रिएशन बळे इटा हला मशीन क्रिएशन बळे आमे ऑलरेडी अलोकेशन करि दैछे राइट मशीन क्रिएशन बळे ऑलरेडी अलोकेशन करि दैछे ताकू हमकु चेंज करे गले पुनी मशीन को डिस्ट्रॉय करी पुनी दीटा मशीन क्रिएट करे अछि लॉन्ग प्रोसेस राइट रिसोर्स वेस्टेड हो चितरे बट ए केस रे वी कैन सिंपली यूज इट ओके जो भी मेमोरी रहला हमें नुआ गोटे कंटेनर क्रिएट करि परिबा Can you hear me, guys? Yes, sir. Perfect. So, बुझिपाला रिसोर्स यूटिलाइजेशन तापर एबे बुझिबा डॉकर आर्किटेक्चर कोन देखो डॉकर आर्किटेक्चर इज द सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर इन डेवऑप्स हम जहां भी पढिबा टूल बहुत सिंपल आर्किटेक्चर किछि नै खाली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्लाइंट हमें कोन जानि छे सर्वर कोन जानि छे एटाला बेसिक कंप्यूटर साइंस रो दुईटा फंडामेंटल्स क्लाइंट कोन सर्वर कोन जानिथिबा दरकार ये तो हमें डेवऑप्स जानछि मान तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स जानिथिबा दरकार राइट क्लाइंट सर्वर कोन से आर्किटेक्चर हमें देखिबा गोटे क्लाइंट रहउची क्लाइंट कोन करची डॉकर यूजेस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर द डॉकर क्लाइंट कंसिस्ट ऑफ डॉकर बिल्ड पूल तो अबिसर करे जानिबा बट हमें एति जानले कोन यूजेस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सो कोन क्लाइंट सर्वर रहउची डॉकर क्लाइंट रहउची डॉकर होस्ट रहउची और डॉकर रजिस्ट्री रहउची बेसिक आर्किटेक्चर कंसिस्ट जेतु क्लाइंट सर्वर में क्लाइंट कोन हम जानते डॉकर क्लाइंट कोन The Docker client is the command line interface for interacting. Normally हमें जानते CLI जोटा हमें कहूचे CLI रहउची command line interface through CLI will up to the server. The client जे request
पठेइबो सर्वर जे रेस्पोंड करिवो से रिक्वेस्ट को प्रोसेस करिवो प्रोसेस कला परे रेस्पोंड करिवो क्लाइंट की रिक्वेस्ट पठेइबो प्रोसेस करिवो की सर्वर एति मन रखतो तापर हम परे डिटेल्स से पढिबा ठीक अछि त एठी कोन होछि ना द क्लाइंट टॉक्स टू द डॉकर डेमन होछि हमर कोन जोटा कि हमर होस्ट मशीन रे रहउछि सर्वर रे रहउछि डेमन टा द क्लाइंट टॉक्स टू द डॉकर डेमन व्हिच फर्दर हेल्प्स इन बिल्डिंग रनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द डॉकर कंटेनर तो ये जो तब पढ़िबा मेटा देखिबा परे नेक्स्ट मतलब बुझे सारी तापर बतै देबे एटा तो एटा देखले डॉकर क्लाइंट डॉकर होस्ट तार जे हम आर्किटेक्चर देखिए बहुत सिंपल डायग्राम टा तार होछि क्लाइंट रे रहउछि हमर डॉकर बिल्ड पुल रन जेटा कि क्लाइंट है हमर क्लाइंट इज नथिंग बट द CLI कमांड लाइन इंटरफेस जे गोटे रिक्वेस्ट पठेबो कागु डॉकर होस्ट को तो होस्ट रे कोन रहउछि डेमन इज नथिंग बट द रन टाइम जे कि ये जो रिक्वेस्ट आसीबो क्लाइंट रु ताकू प्रोसेस करिवो ये डॉकर डेमन से रहउछि कोडी डॉकर होस्ट रे तो डॉकर डेमन कोन करे प्रोसेस करबो जो इमेज आउ कंटेनर सब कोन रहउछि ना होस्ट रे डॉकर सर्वर होस्ट रे ही प्रोसेस हबो तापर गोटे रहउछि रजिस्ट्री होछि गोटे कोन गोटे हब बा जो गोटे कहि परिबा हमें सोर्स नॉट सोर्स कोड एटा हला गोटे बाइनरी कोड बा इमेज repository kind of a repository where we store the images it's a registry where we store the images okay so basically client और server architecture एतिक रहउछि ता सहित हमें registry यूज करछे जोटा repository यूज करछे to get the images image कोन कंटेनर कोन ता विषय पूरा जा डिटेल्स रे पढिबा ठीक अछि एतिक हला आर्किटेक्चर बट हमें एबे क्लाइंट विषय फोकस करिया व्हाट इज डॉकर क्लाइंट Docker client is the command line interface for interacting with the underlying Docker ecosystem. Docker ecosystem सहित बा Docker server सहित interaction करिबा पे हम Docker client use करिबा. It is primarily way for many Docker users to interact with the Docker host. It uses the command line utility or other tools which uses the Docker API in order to communicate with Docker daemon. Docker daemon सहित communicate करिबा पे हमें Docker client use करिया. Simple. Same thing again मुझे Docker client can communicate with more than one daemon. गोटे दुईटा daemon अधिका daemon तमे use करछ अधिक multiple host then we can use it. Docker host कोन Docker host normally host ला गोटे server right गोटे machine right the term Docker host refers to the machine either physical or virtual machine right where Docker daemon runs जोटी Docker daemon run होची तामर Docker host मन रखता simple where Docker daemon runs this daemon is responsible of the Docker daemon actually जेमति एग्जांपल हम देखिले Docker daemon रो काम होची कोन इमेज मेंटेन करबा क्रिएट करबा कंटेनर क्रिएट करबा जहां भी रिक्वेस्ट आसीबो कोडू क्लाइंट रू आकु से Docker daemon प्रोसेस करियो कंप्लीट प्रोसेस करियो ओके सेटा ही से वर्तमान देछि तो कोन करछि where Docker daemon runs this daemon is responsible for managing Docker objects object हला कोन such as image और containers networks ये सब वाला object Docker object बहुत कम objects विषय हमें पढिबा बहुत सिंपल ओके the host operating system provides the foundations for running the Docker engine and containers तो Docker daemon कोन हम जानले right it's a core component that listens Docker API request and manage containers जोटा Docker daemon कोन करिवो ना Docker client रू जो रिक्वेस्ट आसीबो ताकू से कोन प्रोसेस करी सिंपल जहां भी रिक्वेस्ट आसीबो सपोज कंटेनर से Docker client कहबो गोटे कंटेनर क्रिएट करो देन Docker daemon रिसीव कला रिक्वेस्ट रिसीव कला तापर से हिसाब क्रिएट करिवो राइट समथि रिसोर्स एलोकेशंस होस्ट रे कोन रिसोर्स एलोकेशन में को कंटेनर केते रिसोर्स नबो होस्ट रे एलोकेट हो नेटवर्किंग को नेटवर्क रे कोन रन हबो नेटवर्किंग बुझिबो रिमोट एक्सेस को क्लाइंट माने को होस्ट को यूजर एक्सेस करि परिबो ता रिमोट एक्सेस रे हम यूज करी तो ई सब कोन Docker होस्ट रे काम होछ ओके तब Docker daemon विषय हम जानिया कंप्लीट Docker daemon ऊपर तो Docker daemon कोन कोछि ना इट हेल्प्स इन लिसनिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम for the Docker API माने Docker client रू जो रिक्वेस्ट आस रिसीव कोछि it helps managing Docker objects such as images containers बा वॉल्यूम नेटवर्क सब क्रिएट करिया पे
daemon use होची. In case you don't want to create an image, then simply pull an image from the Docker hub. तो आमे registry विषय देखितले एनो डायग्राम रे, राइट? ये registry जदि Docker daemon को आमे कहिबा दे बिल्ड कर बोली, देन से कोन करबो गोटे इमेज बिल्ड करबो. यदि कहबा पुल करिया पे से कोन करबा कनेक्ट करबो कोडी की रजिस्ट्री इमेज को पुल कर दबो. तो सेटा ही एटी वर्थ पुल इमेज फ्रॉम द डॉकर हब विषय भी हमें जानिबा बहुत सारा जिंस अछि दैया. So you want to, in case you want to create a running instance of the Docker image, then we can run the command docker run, then run. Also Docker daemon can communicate with other daemons to manage the Docker services. So Docker service use करके other daemons सहित हमें communicate करि पाता. Okay? So Docker registry कौन? Docker registry is a repository which stores the binary objects. Simple. Docker registry is a repository which stores the binary object. And एटी binary object होची कौन? ना Docker images. Docker images. Simple. Docker registry is a repository for Docker images which is used for creating Docker containers. तो हमें कौन करिबा इमेज यूज करिबा कौन कंटेनर क्रिएट करिया पई. तो से इमेज गुरा को हमें स्टोर करचे कोडी रजिस्ट्री रे. बुझी पल्लो? सिंपल. How would empty word? Registry is a binary repository which stores images, Docker images. Sarla. One can use local or private registry. तो हमें public बा private registry बा local registry use करि परिबा. तमे केमती cloud docker hub use करिबा जेम तमे github use करतले कोन github गोटे कोन source code management SCM, right? But a repository, remote repository system where we can manage our source code. Simple. Right? So here where we can manage the binary objects, binary files, not the source code. Here we keep only binary files. So what is the binary file? After we build the source code, it creates the binary. Simple. So say binary file को हमें नेकरी Docker hub रे रखिबा जोटा कि image को जाय था. Okay? So Docker object कौन? Docker object main two objects are there, image and container. There are multiple other objects are there like network, volumes and all these things, but mostly image out container. These are object which are the image कौन? A Docker image is a type of recipe or template which can be used for creating Docker containers, which includes the steps for creating the necessary software. So a Docker image is a type of recipe or template. So similarly, हमें Jenkins file use करिचे guys, right? What is this Jenkins file? It's also kind of a recipe or template or steps. हम कौन दरकार Jenkins file हमें लिखि देले से हिसाब रे हम automations CI/CD अचीव कले. तो एठरे कोन होछ ना हमें गोटे टेम्पलेट लिखुचे बा गोटे Docker file लिखिबा जोडा हम बुझिबा. तो ता भीतर हमें जहां हमकु दरकार गोटे एप्लिकेशन बिल्ड हवा पई रन हवा पई बा डिप्लॉय हवा पई सब जाको से फाइल रे लिखि कि ताकू गोटे इमेज क्रिएट करिबा. यदि मन रखता डॉकर इमेज इज ए टाइप ऑफ रेसिपी और टेम्पलेट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द डॉकर कंटेनर्स. तो इमेज द्वारा ही हमें कंटेनर क्रिएट करिबा. तो कंटेनर कोन? कंटेनर हला गोटे कोन ए टाइप ऑफ वर्चुअल मशीन व्हिच इज क्रिएटेड फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस फाउंड विद इन द डॉकर इमेज. तो डॉकर इमेज रे जो रेसिपी बा टेम्पलेट अछि ता द्वारा क्रिएट यूज करके हमें कंटेनर क्रिएट करिबा. से तो कंटेनर क्रिएट हो से गोटे वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जोठारी की इमेज रे जहां इंस्ट्रक्शंस अछि सेही सब रे यूज हो एठी. रनिंग इंस्टेंस आ गोटे कोन को द कंटेनर इज ए रनिंग इंस्टेंस ऑफ ए डॉकर इमेज. तो डॉकर इमेज को हमें रन कला परे कंटेनर क्रिएट हो which consists of the entire package required to run an application. The Docker object. बुझि पालो? Good. Okay. ये तो बना किसी डाउट रोइला? Any doubt, guys? Discussion करिया. No, sir. No, sir. So we can go for the installations, right? Both easy installations, nothing else. But तापे हमें कौन Docker रो documentations को follow करिवा, right? So Docker documentations
तमे इजिली मु तुमको बतै दउची तार वेबसाइट होची docs.docker.com docs.docker.com तार ऑफिशियल वेबसाइट docker ओके सो गेट docker तार डॉक्यूमेंटेशंस अच्छी मैनुअल्स अच्छी CLI रेफरेंस अच्छी मु तुमको पूरा बतै देबी केमती डॉक्यूमेंट्स तमे यूज करिवो बहुत सारा ऑप्शंस अच्छी राइट ता इंस्टॉलेशंस विषय में जानिबा बिल्ड विषय से बहुत सारा ऑप्शंस अच्छी बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन से इंफॉर्मेशन अच्छी हमें सब देखिबा केमती कोन यूज करिबा ओके तो फर्स्ट गेट डॉकर तो लर्न हाउ टू इंस्टॉल डॉकर फॉर मैक विंडोज एंड लिनक्स सो गेट डॉकर रे क्लिक कले हमको कंप्लीटली पळे आसी तार डॉकर इंस्टॉलेशंस तैयार करबा पूर्व तार किछि प्री रिक्विजिट्स बा रिक्वायरमेंट अछि सेटा हमको जानिबा पड़िबो सो हमें जानछे डॉकर इज एन open platform right for developing shipping and running applications perfect तो हमें जदी देखियो जिबा पर्टिकुलर को मशीन्स रे हमें चाहू तो मैं विंडोज पाई चाहूछ मैक पाई चाहूछ सपोज मु विंडोज पाई चाहूची तो विंडोज रो किछि प्री रिक्विजिट्स रहउची तार सम रिक्वायरमेंट्स राइट ये सब कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स तो पड़िबो कोन कहूची जे Windows versions, WSL versions, right? The hyper versions by WSL जोटा रहउची hypervisor, right? Windows रो तारो versions 1.1.1 later by Windows 11 64 bit और Pro version, Home और Pro version, free version ने तमे इंस्टॉल करि परिबानी, licensed version नहीं तमे इंस्टॉल करि परिबो Windows रे. Okay, ये सब prerequisite 64 bit processor इतो दरकार minimum 4 GB RAM system RAM की दरकार, right? और मेन थिंग ला विंडोज रे तुम इंस्टॉलेशंस करिया पई विंडोज 10 मिनिमम रिक्वायरमेंट इज होम और प्रो वर्जन्स और हायर और एंटरप्राइज और एजुकेशन वर्जन्स राइट जदि तमे आजो देन तमे इंस्टॉल करि पाइबो जदि भी कोनसी लोअर वर्जन्स बाय अछि ता पई डिफरेंट वे अछि यूज करिया पई बट दरकार नै हमें दिबा लिनक्स रे केमते इंस्टॉल करिवा देखिबा लिनक्स में बहुत इजी ओके सो एटी कोन देछि डॉकर डेस्कटॉप व्हिच हमें डॉकर डेस्कटॉप नवानी हमें एक सिंपल डॉकर इंस्टॉलेशंस देखिबा राइट डॉकर इंजन इंस्टॉलेशंस डॉकर डेस्कटॉप से गोटे नुआ टूल एक्चुअली डॉकर डेस्कटॉप गोटे यूआई काइंड ऑफ एप्लीकेशन से माने यूज करछ हमें डॉकर डेस्कटॉप यूज करिबा तो बहुत सिंपल वे रे तमे इंस्टॉलेशंस करे ताको यूज करे बट हमें डॉकर डेस्कटॉप सिखिबानी वर्तमान हमें सिखिबा डॉकर इंजन केमते हमें यूज करिबा तो एटा डॉकर मु कोन कहली डॉकर इंजन इंस्टॉलेशंस देखली ओके तो आप डॉकर इंजन रो तमरे ई सब सॉफ्टवेयर्स अछि देखो लिनक्स रो यूज करिवा पई सेंटओएस डेबियन राइट फेडोरा आरएचएल उबुंटू बाइनरी सब सपोज मु उबुंटू रे इंस्टॉल करिव डॉकर तो पर्टिकुलरली इंस्टॉल डॉकर इंजन ऑन उबुंटू कोको मशीन से 24 22 मशीन्स यूज कर परिबो देखो installations method तार installations method एति ओके इंस्टॉल कर पाइबो आ गोटे पैकेज डिफरेंट वे रे देछि केमति इंस्टॉलेशंस करिवो ओके सेंटओएस रो बहुत सिंपल थिवो जदि हम सेंटओएस जिबा केवल हां यूज करी इंस्टॉलेशंस मेथड dnf install dnf and then एति so docker CLI server installations तापर start docker okay but हमें देखिबा Amazon Linux रे केमती इंस्टॉल करिबा docker तो सिंपल एक्चुअली हमें दी docker पैकेज yum install docker करिबा मोस्टली Amazon Linux रे जो बट हम चेक करिबा install docker in Amazon Linux 2023 okay installing docker use of AWS CLI तो आप हमें यूज करिया कोन बहुत सिंपल अछि गोटे कमांड तारा यूज होची जोटा कि Amazon Linux एक्स्ट्रा गोटे पैकेज मैनेजर हमें यूज करिबा देखो एटा AWS रो डॉक्यूमेंटेशन ता हमें पाइ जिवा तारा इंस्टॉलिंग docker टू यूज द विथ द AWS CLI तो लिनक्स में हमें देखिबा सिंपल केवल गोटे लाइन कमांड रे हमर काम सरियो एटा लगा लिनक्स 2 पाई और 2023 पाई देखो हम कोन कहतली जस्ट sudo yum install docker that's all एतिकरा हमर docker installation से हिजो
बट उबुंटू पाई हम टिके अधिका प्रोसेस फॉलो करियो पड़िबो राइट तो ए पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशंस गाइस तमे फॉलो करिके डॉकर टा इंस्टॉल करियो बट मु तुमको देखै दोची क्विकली डॉकर इंस्टॉलेशन हम केमती करिवा ओके फाइनली मु जाउची लॉन्च इंस्टेंस सॉरी कौन कर ना और ऑलरेडी गोटे टेम्पलेट अच्छे मुझे टेम्पलेट यूज करी लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट से टेम्पलेट एटा अमेज़न लिनक्स 23 मु यूज करूची लॉन्च इंस्टेंस बाकी जहाँ सेटअप मोर दरकार सिस्टम क्रिएट कर ऑलरेडी मु लॉन्च टेम्पलेट ऐड कर देछि तेटा मु तुमको बताउनी काहे कि ऑलरेडी एटा तुमको ऑलरेडी क्लास रे हमें पढ़ा सरिछि और तमे बेयर मिनिमम जानी थिबो लॉन्च टेम्पलेट रो यूसेज ता कोन तुम एटा यूज करिके कोन गोटे मशीन क्रिएट कर देली राइट तो मु एबे EC2 डैशबोर्ड को जिबी तो मोर गोटे मशीन से क्रिएट देखो मशीन गोटे क्रिएट हो गला ओके तो लेट मी लॉग इन टू दिस मशीन मशीन को कनेक्ट होची से हिसाब रे तमे मशीन क्रिएट कला परे तमे कनेक्ट करिवो तमर रेगुलर वे रे आइदर तमे पुटी यूज करछो कि पावर सेल डायरेक्ट यूज करछो तमे हिसाब तमे यूज करिवो ओके EC2 -user ओके कनेक्ट है एटा एथरे किसी कंफ्यूज होगा नहीं तम हिसाब रे तमे मशीन नबो तम हिसाब रे तमे कनेक्ट करबो आइदर पुटी यूज करबो कि पावर सेल यूज करबो कि .pem यूज करबो कि .ppk यूज करबो एटा तम पे डिपेंड करछ तम एटा जानछे केमति कोन गोटे सर्वर को कनेक्ट करिवा पई ओके तो हमें सर्वर नहीं गला परे कोन करिवा जस्ट यूज करिवा sudo yum install docker एतिकी हाउ इज दैट कैन sudo yum install docker that's all इधर Amazon Linux 2023 ओके देखो कंप्लीट इंस्टॉलेशंस सही है तो प्रैक्टिस करने पे बहुत इजी हो से मु Linux Amazon 2023 सिलेक्ट करछि तो हमर जो Ansible मशीन्स थिला हेरा Ubuntu मशीन रे थिला तो एटा में Amazon Linux 2023 होछि राइट तो फर्स्ट इंस्टॉलेशन सरला पर ए डॉक्यूमेंटेशन रे ही से देइ छै राइट त हमको सर्विस को स्टार्ट करियो पड़ियो तापे स्टार्ट द डॉकर सर्विस कारण डॉकर गोटे सर्विस हिसाब रे हम डॉकर टा रन करियो पड़ियो अदरवाइज इट विल नॉट वर्क ओके त हमें कोन करिवा डॉकर सर्विस हिसाब रे मोदी सिस्टम ctl कमांड देखो सिस्टम कंट्रोल कमांड स्टेटस डॉकर ते कोन कोच इनएक्टिव हमें ताको स्टार्ट करिवा sudo यूज करछि सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर स्टार्ट डॉकर ओके डॉकर स्टार्ट हो गला स्टेटस चेक करे देखो एक्टिव एंड रनिंग हमरो डॉकर इंजन कोन हला डॉकर एप्लीकेशन इंजन स्टार्ट हो गला राइट तो वर्तमान मु जदी डॉकर वर्जन्स चेक करिवि डॉकर हाइफन वर्जन देखो 25 लेटेस्ट वर्जन अछि 25 राइट तो आमी रे कोन इंस्टॉल करले तापरे नॉर्मली कोन होची सेकंड आ गुटे स्टेप से देछि add the EC2 user to the docker group so that you can run docker commands without using sudo तो बेस मोस्टली कोन होची ना हमें EC2 यूजर नॉर्मल यूजर गोटे जोटा कि sudo फाइल रे नाही तो हमें कोन करबा ना sudo यूज करबा जगह रे मोस्टली कमांड जेतो हमें एग्जीक्यूट करबा राइट तो कोन होची ना से कमांड सब रूट प्रिविलेजेस रे बा sudo प्रिविलेजेस रे ऑन होबो तो ताको हमें नॉर्मल यूजर यूज करिया पई एटा बढ़िया लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड एटा डॉकर कमांड नो ठीक अछि एटा लाइनक्स कमांड यूजर मोड देखो एटा लाइनक्स कमांड ओके तो मु एटा कोन करछि यूजर मॉडिफाई करछि को यूजर ना EC2 हाइफन यूजर ऐड करछि कोन डॉकर ग्रुप डॉकर हला गोटे कोन ग्रुप तो मु एटी ग्रुप्स मारिबी EC2 हाइफन यूजर एडीएम विल राइट
यूजर्स अच्छी EC2 हाइफेन यूजर तो मैं कॉपी कर दूची आड़े गला बर्तमान EC2 हाइफेन यूजर ग्रुप रे कौन डॉकर यूजर आड़े गला डॉकर टाको हमें ऐड कर देले बट एबे मु जहां भी कमांड यूज करबी तो बिना सुडो रे एग्जीक्यूट हो तो बर्तमान हमें कौन सब जगह डॉकर इंस्टॉलेशंस देखले डॉकर कंप्लीट प्रोसेस विषय जानले तो डॉकर क्लाइंट हमें नेक्स्ट क्लास रे CLI कमांड केमती सब एग्जीक्यूट करिवे तो डॉकर रे किछि गाइस बेसिक किछि नाही सॉर्ट ऑफ लिस्ट ऑफ कमांड्स अछि से कमांड्स को हमें मन रखिबा आ एग्जीक्यूट करिवा ता सहित केमती हमें निजरो इमेज क्रिएट करिवा केते इनबिल्ट इमेज यूज करिवा सिखै देबी तापर निजे केमती इमेज क्रिएट करिवा ताकू भी सिखिबा सेटा बहुत इंपोर्टेंट निजे इमेज क्रिएट करिवा इनबिल्ट इमेज सहित निजरो इमेज क्रिएट करिवा हम सिखिबा तापर तो नेक्स्ट 4 to 5 क्लासेस रे हमें 4 क्लासेस रे मोस्ट प्रोबब्ली हमें डॉकर टा सारी दवा 4 to